प्रोडक्टिव। अगर आप वीडियो पे नहीं होती तो जो आपका मुखातिब है उसको थोड़ी दिक्कत रहती है, जबकि सब लोग वीडियो पर हों तो वो कंफर्टेबल रहता है बंदा जो बात करने वाला होता है आपसे। प्लीज आप अपने कैमरास को ऑन रखिएगा। जी, लेकिन मैं देख रही हूँ कि एक दो लोगों के वीडियो ऑफ है, तो इसलिए एट टाइम्स वो इसलिए ऑफ करते हैं बिकॉज थोड़ा इंटरनेट के इश्यूज होते हैं। अगर वो वीडियो ऑफ हो तो उनको बात करने में, कनेक्ट करने में आसानी होती है। बट द बेस्ट इज कि हमारे कैमरे ऑन हों सो दैट हमारे जो कम्युनिकेटर उनके लिए जरा कंफर्टेबल रहता है। ओके, हियर गो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जफर अबंडेंस वाला एंड यू आर वाचिंग अबंडेंस शो। Kimberly Wiefling MS is a dynamic consultant, leadership coach, and renowned technologist with human skills. A physicist by training, MS from Case Institute, BS in physics, chemistry from Wright State University. She spent a decade at HP and then led programs at multiple Silicon Valley startups before founding Consulting. She's force for transformation, turning individuals, managers into true leaders and groups into high performing teams. Her signature workshops create interactive experiential learning laboratories where real change happens and business results are measurable. Kimberly builds organizations that achieve what seems impossible, leveraging her superpower, combining deep technological fluency with genuine human-centered leadership. She is the founding member of Silicon Valley Leadership Community, author of Scrappy Projects Management, and creator of tools that help teams perform under pressure. Welcome aboard, Kimberly. How are you? Great. Thank you so much. Hello, everybody. Wow. We're here to expand our minds today. Thank you for your kind introduction. So far, as always, wonderful working with you. So today, the focus of this is the fourth, and this is the last session of our 4-week experiment on these little WorkShock learning labs. So I'm going to do a little icebreaker, warm-up activity, and then we'll have a little check-in, and then we'll dive into design thinking. It will be finished in less than an hour and a half. So this is kind of a fun one. I always start with an icebreaker or brain opener. I just want to do a little check-in. How do you feel today on this sheep scale? Okay, so what you do is you annotate in the menu bar. You see you're seeing Kimberly's screen. Click on annotate, and then you can select a star or a heart or a stamp of some kind, or you can just draw on it. So let's see, how am I feeling today? Let's see. How about this one? Yes. I'm 9. I'm So 9. everybody. Same here. So go ahead and annotate. Oh, you want me to vote for you? 9. I'm 9. Okay. Anyone else? 2. 2. All right. Sweet. How cute. I'm also 9. Nobody likes this 9 one. All right. Yeah, 7. That's cool. 7. Oh, interesting. 1. 1. Yeah, I almost chose 1. You almost did. Wow. Great. Okay. Anyone else? 6. Can you please repeat? 6. Okay, 6. 6. All right. Wonderful. I chose 4 and 5. 4 and Oh. Let me just do this. 4 and 5. Yeah, because
I'm in a limbo, kind of like Limbo. ambivert. And I was Okay. 9 last Monday, but I couldn't join your session and I had a Oh, conflict. Yeah. wow. So let's just take a little screenshot of this and we'll save it for later. Sorry. All right. Okay. So now that we've had a little chance to look at the sheep, I would like to give you a chance in breakout rooms to do a small check-in. So we'll get into rooms randomly, and all I want you to do is take 1 minute to share. How are you feeling really? Okay, you understand? 1 minute, one breath each person. How are you feeling really? I'll close the room after 3 minutes, okay? Go automatically into the rooms. If you're all by yourself, come back, it's fine. All right. Oh, thank you for using the thumbs. Yay, I'm using the hearts. Appreciate it, Ali. All right, so go to your breakout rooms and do how are you feeling really? Joining room 2. Okay. Assalamu alaikum. This is Farheen. Farheen, Justice Valley. How are you, Farheen? Where are you, sir? I can't hear. Can you speak again? I mean, this is Farheen, if I am not wrong. How are you? Me, great. And you, where are you from? Sorry, I didn't hear you. Which country? Which country are you from? You're here from Pakistan or from elsewhere? I'm from Pakistan, Karachi. Karachi. That's cool. And we've got another champ, e-commerce wala. Hello. Your camera is off. I'm Zafar. I'm from I'm from Islamabad, but I'm currently living in Jhelum just because of my service. And wait, I need to connect my screen to. Yeah, here we go. So Farheen, are you student at Rehan School or you're volunteer or facilitator or what do you do? Yes, students from high school whenever campus. Munawar campus. Okay, and level 1 surely, huh? Is it? Only student in level 1. Yeah, that's cool. Okay. And why Justice Valley? And this is massively transformative purpose. I'm a student of learning this from Peter H. Diamandis, that Wala and Wali concept. So why are you Justice Valley? Technically, I chose Justice Valley because I have plans to become a successful lawyer in like cybercrime. Cybercrime, like, okay, cool. That's fantastic. Okay, what did you choose in the picture numbers? I mean, were you 9 or something different? Those numbers, it felt like a little bit cool and funny. Which number? Which number? I am having difficulty in hearing you. There's no voice. Which number did you choose? I mean, I chose 9, and you? I think I chose picture number 1. Picture number 1. Oh, that was bit. I mean, mischievous. I mean, kind of with the tongue out, huh? And why did you choose that? I mean, what was going through your head when you choose that? Sorry, I couldn't. I can't hear you. Can you say low and loud? Can you repeat what you just said? I'm asking you, since I chose number 9 because I feel really energetic and I was very prepared for this session.
and whenever I'm here, I really like it. And you chose number one, and so I just chose just because of the energy level I could see into that picture. And you chose one, and it was an animal with the tongue out, and is that one the with the tongue out? And why did you choose? What was going through your head when you chose it? It felt like a little bit cool and funny. Cool and funny. That's nice. Huh? So these are the family traits. You like to okay, leave the briquette rooms and let's go back. Let's see. Here. All right, welcome back, guys. Just another 10 seconds and everybody will be back. Okay. Okay. All right, here we go. Okay, welcome back. Coming back to the rooms. Please type in the chat one word, feeling, or emotion. How are you really? Okay, just type in the chat. How are you really? I know. Okay. All right. Oh yeah, me too, Rubab. Energetic. Yay. All right. Okay. All right, cool. All right, thank you. Inspired, yay. Let's inspire each other. So today we are going to focus on design thinking. Who knows what is design thinking? Anybody? Design thinking? Okay. Okay, it sounds like maybe not, but this is an approach to innovation, to creating innovation purposefully, predictably, repeatedly. So we're going to focus on that today, but I'll give you a little bit of an overview from what's going on, and then we'll jump into some exercises, because talking about something doesn't make us smarter. Talking about something doesn't make us stronger. So let's talk about this. What can we do? Introduction to scrappy design thinking. I just want to remind you, I'm a physicist, as Affair told you. I worked at HP for 10 years and 7 jobs, 3 failed Silicon Valley startups. I wrote a book, Scrappy Project Management. I wrote another workbook on organizational cultures. My one book was translated into Japanese. It has been fun. I'm really so inspired to work with you all, because I work mostly in the corporate world, and here is why corporations fail. They don't build trust. They can't communicate, make decisions, or solve problems. They don't have clear goals, and the individual and team goals are not aligned. That's what we worked on the first 3 weeks. But let's see what we can do for this week. Now, this is the winning strategy. Most businesses focus on priority 3, this current cash today. But the smartest businesses focus on the future, the breakthroughs, the improvements as the number 1 choice, and then breakthroughs and innovations, true moonshots as the number priority, and then cash flow. So let me just show you a few examples. Here's a chart that shows what we call crossing the chasm. This is 3 more. In the early phase of innovation, things are weird and strange, like AI. People don't know how to use it. They're worried about it. They're afraid of it. But then it finally crosses this chasm, it's called, to be accepted and grows into a huge success, and eventually dies out. And then mature technology, things decline. For example, Kodak. Kodak founded in 1889, bankrupt in 2010. But do you know, because of digital cameras,
Do you know who invented the digital camera? Who did it? Who do you think digital camera? Can we take a wild guess? Wild guess. Kodak? Kodak invented the digital camera. Look how ugly it was. And they showed it, the engineers showed it to the executives, and they said, cute, but don't show it to anybody. And then Motorola was the king of cell phones long ago. Oh my gosh, Motorola was so successful, but they were killed by Nokia. But Nokia, which had 52% global market share in cell phones, went down 2%. Do you know what killed Nokia? Oh, so smartphones, all right, that I want you to see. Businesses need to understand. Every organization needs to understand. Change or die. Oh my gosh. I mean, Encarta was a Microsoft product. It was an encyclopedia that when they sold, it was a Microsoft product. Do you know what killed Encarta? Does anybody use Wikipedia? Yeah. A free Wikipedia killed my product. Come on. Innovate or die. Who's with me? Roar. Do you want to be a dinosaur? Yay. Thank you, Rehan. Thank you. There's a book called How the Mighty Fall. Why some companies never give up. Here's how it happens. First, you're successful. Oh, wow, we have REHAN School. Wow, we're growing. We're wildly successful. Look how great we are. That is the danger zone. Because when you're at risk of disruption, a different approach, a better way, a breakthrough. So there's a book called Lead and Disrupt. You can check it out if you want. I will show you a quick summary. This is design thinking compared to problem solving, all right? Here, that's problem solving. Design thinking is jumping to the possibilities and creating solutions that are out of line with what people would think. You cannot make a car by making a horse go faster and faster and faster, okay? And this is where innovation is. What is desirable, possible, and what can be. So design thinking takes a people-centric approach to that. And the classic definition of design thinking is we feel the needs of the people we're serving, we're trying to reach. We define our challenge. We create ideas, we prototype, and we test. So that's the classic version of design thinking. We are going to do a scrappy version of design thinking today. We're not going to use that version. You're going to learn how to do it in a simple 1-hour version. Okay, hand was raised. Rakshanda, what can we do for you? You can get me the winning numbers for the lottery ticket. Okay, were you sharing your screen when you, or that was just, are you sharing your screen when you were telling us about the design thinking just right now? Yeah, I was sharing the slides, yeah. Okay, so I'm not seeing it. I don't know if everybody else is seeing it. Who is seeing the slides? Anybody? But none now. Are you on a web browser or on your desktop app? I'm on the desktop app, but I'm not seeing the slides for some reason. Well, I'm not sharing them right now. I stopped so I could answer your question. All right, I'm going to go back to sharing them again. Let's see. And all right, so in order to get a breakthrough, you start in the future and you work backwards from there to find out how to get to that better future instead of traditional problem solving. This is what it looks like. A mouse can go through the maze or you can go around it. This is starting in the future. So what I'd like to do today is start in the future with you all and see how many paths there are to go backwards to the present moment. So what I'd like you to do is let's put into the chat, or no, let's create together a shared whiteboard. I'll make a whiteboard and I want you to create, imagine it's the year 2030.
Okay, it's the year 2030, and your wildest dreams have come true, right? So let's put on here, what would that be? For Ragshanda, she would say winning the lottery. Okay, your wildest dreams come true. But let's put down something about yourself, your family, your work, your school, your team, your community, your country. Put down your big dreams of the future. All right, look at you all. Travel the world. All right. Abundance of peace and prosperity. Thank you. Yay. This is what's called starting in the future. It's like scenario planning. Every company does this kind of approach to creating the future. Buy car, travel the world, $1 trillion. Yay. All right. Uh-oh. Too small. All right, look at that. Empower 1 million people. Yes. Yay. All right. Yes, just thinking about this. And the reason I love to do this silently is so other people won't try to kill your ideas. Yes. Other people always want to tell us why it's not possible, it's difficult, it'll never happen, it's not realistic. Remember what Kodak executive said to the engineers? Oh, yes, cute. Digital camera, don't show it to anybody. They couldn't imagine that this was going to be taking over the world, this digital photography. All right, look at that. Look at these wonderful dreams. Look at this wonderful world we would live in if we were all focusing on creating our dreams. Yes. All right. Okay, well, just let's take 30 seconds more. All right, we'll see if we can keep things from overlapping here. Yay. Yeah, sometimes making the text big, yay. Oh, nice. Great, wow, making the world a better place. Yes, so many people want to improve our world and help each other. This is the beginning of innovation. If you aren't even willing to imagine a different future, you can never create it. All right. Okay, so everybody, let's finish it. Finish finding your purpose. Yes, got it. Yes. Uh-oh. I might have ruined it. Okay, so I'm going to take a picture of this one. I know some people are still writing, but I'll take a picture of this. And then we will. Okay, I'm going to stop sharing this now. Okay? All right, keep thinking about your dreams, though. Don't give up on your dreams. All right. So, how did it feel? Write in the chat. How did it feel when you were writing? What were you thinking as you were writing the dreams of the future with no evidence it was possible, without knowing how? What did it feel like? Please put in the chat. Without anybody killing your idea. Yeah. Wow. Yes.
All right. Whew. Yeah, it feels great, especially with nobody to tell you, no, it'll never work. It'll never work. You'll fail. Forget it. It can't happen. Oh my gosh. All right. All right, so cool. So now I'm going to, have we done this 9 dots challenge before? Have anybody know the 9 dots? Did we already do it? Yeah, we have done in the last Yeah, we did session. it. Okay, great. Okay, so yeah, so creativity, it takes a process. It's really tough to be creative sometimes because we learn what doesn't work. We learn how to be practical. So we are going to find a way to be creative that you can do whenever you want to be creative. So first, I want you to do with me a little exercise. Just stand up, or if you can. We're going to learn to remember this. Stop, think, organize, plan. Okay? So with me, stop. Everybody, stop. Okay, cool. Think. We go like this. Think. What's going on? What's possible? What seems impossible? And then organize. Okay, let's ground ourselves. Let's get centered. Let's be conscious here, this present moment. Plan. Big why. Why does it matter? Big who. Who cares? Who can help me? Who can hurt me? Who will it benefit? Big what? What exactly would success be in this big crazy dream of the future? And the measures of success. And then move in that direction. So let's do it together, right? Stop. Think. Organize. Plan. Then go. Now let's do that. Let's do that together with some mini projects that will help you learn this design thinking approach. This is used by IDEO. This is used by many Silicon Valley companies. And we teach this all over. Recording in progress. Okay. So here we go. Stop, think, organize, plan. All right. Big why, big who, big what. Measures of success. And how is later? This is what it looks like. It's iterative. We don't do them in a straight line like that. We go over and over. It takes 6 times going around this loop for most products. Why, who, what, how, and then experiment, prototype. This is the more detailed version of it. What if? Future focus. Stop, think, organize, plan, asking why 5 times. Find a purpose beyond profit, a mission that matters. Do a stakeholder analysis. Ask what exactly is success through the eyes of the stakeholders. Brainstorm how. And then iterate, prototype. There's so many kinds of iterations. So the first thing I want you to do is consider your challenge statement. Each person, please consider your challenge statement. Think of the future you were creating, and I want you to write it down or write it in the chat as if it's already happened. So, for example, every single person in Pakistan is earning over $500 a month or more, happily and joyfully. Okay, that's a challenge statement. You say it as if it's already happened, positive, powerful, present tense. So please make your challenge statement that you will use for today's activities. Future focus, so stated in the present tense as if it has already happened. Positive, powerful, present moment. Okay? Everybody, have one sentence. I have built a world without homelessness. Yes. Now, Zafar, let me challenge you, Zafar.
because you're focusing on homelessness when you say that word. So what would be the positive alternative that doesn't use the word homelessness? Because you're still reminding me about homelessness. What should say? I mean, people having home ownership. Every person on planet Earth has a clean, safe, healthy, happy home to live in. Okay, you see the difference? You focus on what you want to create, not what you want to change. Okay, so just everybody rewrite your sentence so it's focusing on the world you want to create, not the problems you want to fix. Problem solving is different than design thinking and innovation. Fixing a problem like homelessness, it's very useful. And transforming the world so everybody lives in a clean, safe, happy, healthy home, that is an innovation goal. All right? And this is what we need if we're going to do design thinking. Oh, look at this, Aish. I have successfully overcome all doubts and taken full ownership of my learning and growth. I confidently embrace challenges, stay consistent, and turn every obstacle into an opportunity. Ooh, I'm proud of the progress I make every single day. Yay. That's a great example. All right. Okay, so does everybody have a sentence either here or secretly? Okay. All right. Well, so every human being have a home. Yay. Thank you, Zafar. Not just a home, but a wonderful home. How about it? It could be a box. All right. Oh, good. Look at this. I create opportunities every single day for myself and everyone around me. I'm successful, empowered, make success successful for all. My life is living example. Yeah, feel free to use ChatGPT AI to generate a wonderful positive statement. That's very useful. You tell it, please create a challenge statement focusing on this. It's wonderful to use ChatGPT and AI as a partner in your adventure. Oh, beautiful, beautiful. Thank you. Okay, so now we're going to focus on the next piece. All right, so get ready because each of you will work on your own project, and I'm going for short discussions from time to time. So let me ask you a question. Okay, here's a question for you. I have a pumpkin. I want this pumpkin. Zafar wants this pumpkin. We both want this pumpkin. We don't have any money to buy another pumpkin. We only have one pumpkin. What should we do? What should we do? Help us. I've got an idea. I mean, if I'm allowed to. Sure, I hope somebody will answer. Yeah. I don't want to just talk. One thing there, we can do two things. One, we can just share this among us, and then we can regrow it. I mean, it has got a lot of seeds in it. Oh, well, we don't have time, but that's a great idea, Zafar, but we don't have time. We need it right now. And I don't want half of a pumpkin. Are you saying cut the pumpkin in half or something? And All right. I got third thing. I mean, we can buy more. Oh, no, we don't have any money to buy more. We only have one. Does anyone else have any ideas? You can split it a half. Split it in half. Split it in half. Most people say cut it in half. But I didn't want a half of a pumpkin. Let me tell you, I wanted to make a jack-o'-lantern, like for Halloween. And Zafar, he wanted the seeds. Oh, too bad you didn't ask why we wanted the pumpkin. Remember? Stop, think, organize, plan. Start with why. Why? Okay? So I would like you to ask why 5 times. So here is what we do. For your challenge statement, you're going to do this. So
let's say we want to have everybody living in a happy home. All right, everybody on planet Earth has a happy home. Why? Why does that matter, Zafar? Please tell me why. Yeah, everything starts from the home. Just because once you have peace, then you can do the rest of the things. Do, be it creativity, be it enjoyment, refreshment, whatsoever. It starts from home. Security, safety, Okay, dignity, now, peace. okay, good. So let's keep it short. So let's go down. Now, why? Why does everything start from the home? Give me the second why, because we're asking why 5 times. Why is the home so important for everything else in your life? Security. Security, tell me more. Say more about security. Security, peace, tranquility. Okay, cool, wonderful. And so the home, creativity, this is where creativity starts. Even life is born there. Yes, all right. Now, why is security, peace, tranquility, creativity so important? Let's do the third why so far. Why do we need security, peace, and tranquility and creativity? Just because we are human being, we always want the better, the best, and more better. Oh, we always want more and better. What else? That's just because the human instinct is this one. I mean, this is out of instinct. Okay. Human instinct. Okay. And why is the human instinct like that? Why do we always want more and better? Why is this human instinct? Yeah, just because we are spiritual beings having human experience. We are spiritual beings having a human experience. And why does that matter so far? Why is it so important that focusing on we are spiritual beings having a human experience? Just because I believe, just because we were built in heaven and we were built for heaven, and that's is all the time that goes in our back of mind. So that's why we keep thinking better, we like better, we love better things. So we love serenity, sequence, and greenery, cleaning, and that's why we need everything at its best. Okay, do you see how we started with people need homes and we got to our spiritual identity, the essence, by asking why 5 times, each time asking why of the one right above it, okay? So this is what I want you to do. This is what I'd like you to do is for your challenge statement. Stop sharing. For your challenge statement, ask why 5 times, each time digging deeper. So, would you like to do it alone or together? If you want to do it together, wave your hands like this. So I'll put you in pairs. We want to do it together because there's a lot of energy when more people are there. Okay. Yeah. So let's see how many people we have. So 2, 4, 6, 8. Okay, I'm going to open like 14 rooms, and you're going to find a partner, hopefully. You'll find a partner, and you'll together do it with each other. So let's see. We're going to have 5, 10, 12 rooms. Let's try 12 rooms. Find a partner, 2 or 3 people in the room, and help each other. Ask why 5 times to get to your core purpose. This is so important. So let me create the rooms now, and please feel free to join a room, 2 or 3 people per room. If you're all by yourself, come back and I will send you to another room. Okay. Let's see. I'm going to move Zafar to room 12. Okay. Okay. Yeah, I'm trying to get 2 people in each room. Are you there? Okay, good. All right.
ओह ग्रेट। क्या हाल है आपके मैम? आप यू नो वेयर टू बी सीन। आप बिल्कुल बिजी हैं और मैं तो अब डर लगता है आपसे बात करते बिकॉज वेरी बिजी। क्या हाल है? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं जफर भाई? जबरदस्त, बहुत आला, जबरदस्त। मैं कल परसों आपके पड़ोस से गुजरूंगा जिधर आप रहती हैं, उधर से मैंने जाना सिंध अच्छा अच्छा। और दैट्स माय वे। क्या हाल है? ठीक है तो आप? और मैं और बहुत अच्छी एक ये कोशिश है आपकी, बहुत अच्छे सेशंस बहुत, मैं करने इनके का। बहुत पीछे लगा हुआ था। मैंने सेशन, फर्स्ट सेशन आई जस्ट जॉइंड इट, वो भी सब ध्यान पुश करते रहे कभी हाँ, कर लो। मेरी क्लासेस के साथ टाइम क्लैश आ रहा था ना। आई वाज हैविंग ए टीचर ट्रेनिंग बैच 4, तो अरे गुड मुझे गुड फिर गुड उसके गुड। साथ तो क्लास होता था। मेरी 8 से 10 क्लास होती थी और आपका ये सेशन 10 बजे तक की होता था, 9 से 10। तो फिर इस वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। अब वो सेशन खत्म हुआ तो आज फिर मैंने कहा कि आई वाज वेटिंग। लास्ट टाइम भी जब आपने शेयर किया तो मैंने कहा था मुझे एक दिन पहले बता दिया करो, नहीं हाँ तो नहीं, मुझे मैं उसके लिए मैं माइंडफुल था, लेकिन मैं बहुत, ये तो आपको पता ही है ना, वो जिस तरह की इनकी एनर्जी है, जो ये देखो क्या चीज अमेजिंग है। अगर हमें ये बचपन में चीजें पता होती तो आज हम क्या होते। और मैं तो, और फिर जो आप, लेकिन अभी भी देर है, दुरुस्त है, कुछ चीजें हाँ हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। जैसे अभी भी वो हमें कनेक्ट करा रही हैं कि एक दूसरे के साथ बैठ के अपने बाय जो है वो सोचो। कभी हमने इस तरह सोचा नहीं ना, हमें कभी कभी ऐसे इधर से सोचा नहीं, डायरेक्शन। एग्जैक्टली बिल्कुल। अभी जो आप, मेरा वाय जो है ना, बड़ा दो चीजें हैं। एक तो मैं ग्लोबल अबंडेंस की बात कर रहा हूँ। जिस तरह 1920s में यूरोप ने सोचा था कि नो मोर लड़ाई, लेट्स कोलैबोरेट कोऑपरेट, और आज जो यूरोप कहाँ पर है, वो एक दूसरे कंट्रीज में ऐसे जाते हैं जैसे आप पाकिस्तान में डिफरेंट सिटीज में जाते हैं। तो दैट्स माय ड्रीम। दूसरा ये है कि जो ये खत्म होना चाहिए, जो घर की ओनरशिप का इशू है ना, ये हर बंदा, अब इस वक्त इतनी इन्फ्लेशन पूरी वर्ल्ड ओवर है और अमेरिका में भी लोग इतने होमलेस हैं। तो मैं उसको कह रहा हूँ, आज मुझे इन्होंने बड़ा अमेजिंग चीज बताई कि आप होमलेसनेस को फोकस कर रहे हैं। आप होम की, एक डिग्निफाइड होम होना चाहिए यार किसी का, पॉजिटिवली मैं इसको रीस्टेट करूंगा, आज मैं बैठूंगा इसके ऊपर। दैट्स अमेजिंग। और व्हाट्स योर्स? आप तो ट्रेनिंग वाली हैं ना भाई, आपका तो जो मैसिवली ट्रांसफॉर्मेटिव पर्पस है, दैट इज फॉर ट्रेनिंग। आपने पीटर डिमंडस को पढ़ाई की? मेरा वाय जो है वो ये है कि मैं चाहती हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स को फ्री कर दिया जाए। तब उनको कोई आप कोर्स नहीं दो, उनसे पूछो उन्हें क्या पढ़ना है। दैट्स एक्चुअली मैटर्स। आप कभी भी बच्चे को ये नहीं बताओ कि ये पूरा करिकुलम है, ये उठा लो। भाई वो क्यों उठाए? आप उससे पूछो भाई आपने क्या करना है। आप अच्छा उसको नहीं क्लियर, आप उसको हर चीज दे दो। फिर उसको 1 साल 6 महीने उसको फिगर इट आउट करने दो, मुझे क्या करना है। ये चीज बहुत जरूरी है। हम अपने सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करते और वो हमें बाद में जिंदगी पूरी गुजारने के बाद सेल्फ रियलाइज होता है, ओहो मैंने तो ये करना ही नहीं था जहाँ मुझे भेज दिया गया। दैट्स तो अमेजिंग। मेरे ये पर्पज है कि ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए टीचर्स की जो कि बीइंग अ फैसिलिटेटर हो जाए और स्टूडेंट को, लर्नर को टेंशन फ्री, इंटरेक्टिव और लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाए। दैट्स इट। वाह, ये जो सुजाता मित्रा का एक्चुअल कॉन्सेप्ट था, और मैडम मारिया मोंटसरी इसी में। और फिर एक जिस हाँ। तरह ना, जिस तरह आप क्या ड्राइवरलेस कार्स आ गई हैं तो नो मोर ड्राइवर्स। अच्छा, इसी तरह को आपके ड्राइवर। हॉस्पिटल्स आ गए हैं तो नो मोर डॉक्टर्स में भी। अभी बड़ा बहुत टाइम लगेगा इसको, मे भी उतना नहीं लगेगा जितना हम अभी कह रहे हैं बड़ा, जैसे मेरे मुंह से इतना बड़ा बड़ा निकल गया, लेकिन मे बी सून। और कई फिर भी चीज, जो डॉक्टर्स हाँ हैं उनकी जरूरत रहेगी क्योंकि एआई को ऑपरेट करने के लिए सो फॉर सो ह्यूमन ही चाहिए और वो ह्यूमन उसको बेहतर तरीके से ऑपरेट कर सकता है। लेकिन अगर हम जहां तक कि कार्स की ड्राइविंग की बात करते हैं तो वो बेसिक हम कर सकते हैं, ह्यूमनलेसली पॉसिबल है क्योंकि आपने एक मैप फीड कर दिया ना उस गाड़ी को। जब आपने मैप फीड कर दिया तो उसने तो मैप को फॉलो करते हुए आपको कहीं ना कहीं पहुंचा ही देना है। लेकिन जब हम मेडिकल हिस्ट्री की बात करते हैं तो वो बहुत एक जिंदगी का मसला है और वो हम एआई पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि समहाउ एआई पे कोई मैल फंक्शनिंग हो जाए। लेट्स सपोज कि उस एआई को आपने वो बॉडी पार्ट उस तरह से कभी जो है वो डिजाइन करके दिया ही नहीं, तो वो कैसे उस प्रॉब्लम को और उस बॉडी पार्ट को उस तरह से देख सके। तो इसलिए एक ह्यूमन का होना, बीइंग अ डॉक्टर, ये कंपल्सरी रहेगा एआई के लिए। हाँ, कुछ चीजों में जैसे अभी हम ड्राइवर्स की जरूरत नहीं रहेगी तो ड्राइवर्स को कुछ ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। या तो इतने माहिर हो जाए कि वो अंदर बैठ गए, वो ड्राइव नहीं करे, लेकिन उसको कमांड दे दे रहे, उसको गाइड करते रहे, उसको पता हो कि किस स्टेशन पे जाके कितना दूर वो स्टेशन आएगा और हम उसको गाड़ी को रिचार्ज कर सके। ये तो एआई को एआई बता देती है कि भाई इतनी दूर वो स्टेशन आने वाला है,
लेकिन अब उस स्टेशन के लिए बिफोर द टाइम आपको गाड़ी को प्रिपेयर करना है कि भाई इस स्टेशन से पहले इतनी चार्जिंग रहेगी तो हम उस स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। तो ये चीजें हमें सीखने की जरूरत है और जिसमें हम नहीं देख रहे और हम सीखना भी नहीं चाह रहे। That's true. हम बैक टू द टॉपिक कि हम क्यों ढूंढ रहे हैं अपने मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट या चैलेंज स्टेटमेंट का। हिजाब, हाउ आर यू? हिजाबुल हुदा, बेटा क्या हाल है आपका? अपना थोड़ा सा इसको लैपटॉप की स्क्रीन नीचे करें ना आपका, तो बिल्कुल ये यहाँ लाइक दिस, थोड़ा सा भी ऊंचा करें आपका रूम, और थोड़ी सी पीछे करें स्क्रीन हल्की सी। लैपटॉप को 1 आर्म डिस्टेंस पे सेट करो बेटा, यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस रखो, फिर आप सही से नजर आओगे। सही, यस यस। हाँ, अब हम बात करें कि जो मिशन स्टेटमेंट है उस, सॉरी, जो हमारी चैलेंज स्टेटमेंट है उसके क्यों के ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं कि ये क्यों हम करना चाह रहे हैं, आप क्यों पढ़ाना चाह रही हैं, या आप क्यों चाहती हैं कि जो अभी आपने इतनी खूबसूरत बात की कि आप चाहती हैं कि जो जो स्टूडेंट है ना वो खुद से लर्न करे, और वो वाला लर्न करे जो वो खुद से चाहता है। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। हेलो, हाउ आर यू? Kimberly is back. Good, good. How are you? Were you able to talk 5 whys? To dig to the core of your dreams? Good, 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 good. All right. We're going to finish in like 1 more minute. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for throwing that such wonderful and interactive session on weekly basis. Thank you so much. Good to see you. It makes it more work for you. I appreciate your wisdom. Okay. All right. Closing the room. See you back there. See you. Okay, got it. Okay, let's go back. Recording in progress. Assalamu alaikum. Okay, everybody's coming back. Thank you. Welcome, welcome. Okay, wave your hands. Were you able to get more deep purpose by asking why? Yes, great. You were able to get more deep purpose of why. Now, I noticed one group, I won't say who, they started to talk about how. How? No. How is later. If you start talking about how too soon, you will get a lower quality result. I will give you an example. Let's see if I can find an example. Yeah, anyhow. If you're asking why and you're exploring, your brain expands and you have so many possibilities. So this is what we're doing. We're doing idea expansion. We're diverging, idea generation. And then later, after we have possibilities in the future, big why, big who, big what, measures of success, then we will select which ideas to take action on, which ideas to experiment, prototype. And then we will repeat again, expanding and choosing, iterating. This is called iterate. And this is so challenging because people like to do how right away, but it's not a good idea. Okay, so I'm going to show you the next step. So write down your big why purpose. Please put it in the chat, okay? Put it in the chat, your big why purpose. Let's see. And then I have another challenge for you. Everybody, big why purpose. Oh, some people ran out of time. Well, okay. Learn the process and then repeat the process afterwards. I teach workshops like this that takes 2 days. All right. Now the purpose behind it. Why do you want to end world poverty? Why does it matter? And you should get down to something really deep, like belonging, like because it brings us to our spiritual reality. Okay. So big why, really understanding the purpose beyond profit, the mission that matters, why it really matters. That's the first step
Most people don't do it. They skip it. Okay, so I don't want you to skip it. I want you to do it. Now here's the next thing. I'll give you a quiz. All right? Here's a bunch of parts of a car. I would like you to put a heart on the number one most important part. I'd like you to put a star on the number two most important part. And I'd like you to put a check mark on the three most important part in this table. Go ahead. What are the most important parts of a car? If you don't know how to annotate, please just tell me and I will do it for you. Anybody? Number one most important part of a car? Engine. Engine. Many people said engine. Engine. All right. What about number two most important part? Light. Brake. Brakes or lights, okay? Brakes. Brakes. Wheels and tires. Wheels and tires, number two. Okay. And what about number three most important part of a car? Ignition. Ignition. Anything else? Lights. Lights, okay. All right. What? Mirror. Mirror, okay, maybe. I can't, okay, mirror. All right, so let me show you. Let's see. I'm going to show you. Remember the stop, think, organize, plan? Remember that? What does it start with? Stop, think, organize, plan. Why do we want the car? Who wants the car? I live in a really expensive part of the world in California, and I just want a cheap place to live. I'm going to live in this car. I'm going to pull it to my friend's house, put it in their yard, in their garden, and I'm just going to live there. I'm never going to drive it. Never. Now, what are the most important parts of a car if you know the big why and the big who? Huh? Everything changes with the priority. I mean, it needs the capacity, the room, the car room. Everything changes. I need a driver's seat. I need air conditioning. I need a Yeah. passenger seat. I might need some lights and I might need some mirror, sure. Maybe cooling system, yeah. I don't need True. cooling system. I don't need engine. I don't need wheels and tires even. True. All right. Okay. So again, when you know the big why, big who, big what, before the how, then you can make a better choice. You change the priorities. So now for you, I want you to think about the big who for your dream. You have the big why, you have the challenge statement, you have the big why, and now I want you to think about the big who. Now this is the most complicated part of any exercise. This is called a stakeholder map. You won't be able to finish it today, but you talk about the big who. Whatever you're doing, who are you going to be involved with? Who do you need to communicate with? Who do you need to help you? Who do you need in order to achieve this wonderful future? You can't do it alone. You can do it with Post-its on a flip chart. You can do it like this. You can draw a little diagram. Sometimes, you can draw a diagram of all the different stakeholders. So what I want you to do, this is complicated. It can take you more than an hour. So for now, I just want you to type your three biggest stakeholders. Who are your three biggest, most important, biggest, but highest priority? Your three highest priority stakeholders. Okay, and I want you to think about that in your breakout rooms. I'm going to open the rooms again. And you talk about who are the top three most highest priority stakeholders that will
care about this project, that will help you, hurt you, that will benefit from it, and make sure you know who is number one. So I'm opening all the rooms. Go back into your breakout rooms. हेलो मैम, सलाम अलैकुम, वेलकम बैक। अच्छा, मेरे लिए तो 3 में ना सबसे इम्पोर्टेंट है ह्यूमन, मतलब ह्यूमन बीइंग्स, दूसरा क्लाइमेट है, और तीसरा मैं सोच रहा था कि क्या होगा। हम चाहे कोई सा भी काम कर रहे हो जिसमें क्लाइमेट होता है, मतलब वेदर इज इम्पोर्टेंट, और या फिर क्या करें, और तीसरा क्या फैक्टर होना चाहिए। यही सपोज अगर मैं ग्लोबल अबंडेंस की बात कर रहा हूँ, या मैं होमलेसनेस की, अब होमलेसनेस की बात नहीं करनी चाहिए, अब हम क्या कहें कि होम ओनरशिप की बात करें, तो या जिस तरह बात की है एजुकेशन के हवाले से आप सोचती हैं, और आपका एक मैसिवली ट्रांसफॉर्मेटिव पर्पस है ट्रेनिंग ट्रेनिंग देना, और उस वाले से हम करें तो क्या हो सकता है कि जो मेरे लिए स्टेक होल्डर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लर्नर है। वो चाइल्ड जिसके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा कि उसको सुना जाए, उसको इंडिपेंडेंस दी जाए, उसको दिया जाए आप पूरा राइट हो, क्योंकि जिंदगी उसने गुजारनी है, आपने नहीं। उसने फैसला करना है कि उसको किस तरह गुजारनी है। हम ये चीज करना छोड़ दें कि हम दूसरे को हमेशा गाइड करें, डायरेक्शन दें। वो बेहतर जानता है, वो अपना सही करे गलत करे, वो कर रहा है ना, वो खुद रिस्पॉन्सिबल है अपने डूज का, अपने डॉट्स का। तो आपके हिसाब से फिर एक तो आपका स्टेक होल्डर हो गया, स्टूडेंट हो गया, दूसरा स्टेक होल्डर मेरा वो टीचर्स हैं, जिनको इस चीज से खुद टीचर, को आजाद करना चाहिए कि वो किसी को बाउंड करके वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए। भाई आप नहीं करो ये काम, आप किसी एक चीज में बहुत अच्छे हो जाओ और ओके, उसी बच्चे पे वो काम करो, उसकी ठीक सेल्फ है। आइडेंटिटी, सेल्फ रियलाइजेशन पे काम करो। और तीसरा थर्ड सबसे ज्यादा पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स हैं, अच्छा ठीक है। आप अगर टीचर और पेरेंट्स को एक बॉक्स में दें तो फिर तीसरा क्या होगा, एनवायरनमेंट होगा। हाँ, तीसरा एनवायरनमेंट होगा, क्योंकि बच्चा एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीखता है, और उसके लिए बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो हम एनवायरनमेंट बहुत इजीली जो है वो ग्रास्प कर सकते हैं। तो ये चीज है, मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स का काम जो है वो पेरेंट्स ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। ओके, टीचर और पेरेंट के अपने रोल्स को कर सकते हैं। ओके, एनवायरनमेंट में पेरेंट, टीचर्स और स्टूडेंट, ये है। ओके, और मेरे लिए ढूंढ के देना, एक तो मेरा तो हो गया। ओके, वी आर गोइंग बैक। Recording in progress. If I talk about the education system as I am the part of AI education, so I think that the main and the high priority stakeholders like parents, students, and the facilitator, the team of the management like principal, vice principals. This is my just opinion about it. Yes. And you know what? Each of those cares about different things. Each of those cares about different things. So here's what I'd like you to do now. I'm going to ask you, so I'm going to show the screen and I'm going to ask you each to do an empathy map. Let's actually go for the future. Think of your number one highest priority stakeholder, and I want you to imagine you're at a party celebrating the amazing success of your big why, your big amazing breakthrough. And they are saying, thank you so much. What would they be saying at the party? What would they be thinking about this amazing achievement you've done? What would they be doing? What would they be feeling? So, for example, if we eliminate homelessness, if we create wonderful, happy homes for everybody on the entire planet, what will people be saying? And they'll be feeling empowered, they'll be rejoicing the ownership, they'll be peaceful at mind, and they'll be more tranquil, and the creativity is there, just kickstarting the creativity, and a sense of achievement having a home. Well, okay, sense of achievement. Okay, and what will they be saying to you and to their neighbors?
Yeah, sure. They'd be proud of their possession that they got the newly put. Like they'll be rocking some party, or they'll be happy, and they'll be probably dancing, singing, and maybe asking their loved ones to come and have the let's rock a party, or like be home like There you home go. a party, or they'll be really proud. They got a lot of energies. All right. So you see what happens. You have this stakeholder, someone who now has a home. This is one of the big who. Now you get more deeply connected to them by thinking, what would they be saying? What would they be doing? What would they be thinking? What would they be feeling in the future? Okay, when this is done and wildly successful. All right. So everybody, I want you to make an empathy map. Take a picture of this. Let's see. Let me stop sharing. I'll share again without any thing. So take a picture of the empathy map. All right, and then go into breakout rooms again. What will they be saying, doing, thinking, and feeling for your number one stakeholder, the most highest priority, the big who? When you're wildly successful, just think of one thing in each situation. And if you're all by yourself in the breakout room, please come back and I will send you to a different room. I don't know why some people now there are less people in the breakout rooms than before. All right. So I'm going to open the rooms, go to breakout rooms. Each person says big why, big who, big what. And each person is going to talk about what their stakeholder would be saying, doing, thinking, and feeling. Okay? Let's try it. Let's see if we can get at least 2 people in each room to talk with each other. Thank you. Go. अस्सलामुअलैकुम मैम, क्या हाल है? ठीक है? तो बिग वाई, बिग होम और मिशन स्टेटमेंट के हम अब एम्पथी मैप करें. लाइक अभी आपके वाले से तो ज़ाहिर है आपका तो कैनवस बड़ा क्लैरिटी है, उसमें आपकी जो अभी तक की जो काम है और ख़ास तौर पर जो आप सेशंस ले रही हैं और टायरलेसली आप अपने गोल की तरफ बढ़ रही हैं, तो आपकी क्लैरिटी और बढ़ती जा रही है और आपकी एनर्जीज भी और आती जा रही हैं. हम अगर आपसे पूछें कि आपका जो एम्पथी मैप है उस पे क्या क्या नजर आता है आपको? जैसे कि उन्होंने कहा कि आपने अचीव कर लिया और अचीवमेंट के बाद अगर कहीं आपने डिस्कस करें तो दैट मींस द स्टूडेंट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल व्हाई दे विल बी most happiest person on the earth, and because they have a freedom, they can choose any kind of their future career that they want to pursue. That's really big achievement for them. The person who just want to figure it out about him or herself, what he wants to do in this current time or in the future, they will be really passionate about that. That's actually the amazing thing, and they will be very happy, and they will own that thing that they just selected by themselves, rather than by pursuing or pressurizing by the community, parents, or any other factor. Then they feel ownership, they feel proud, and they will always accept it. Whether they are facing some kind of a challenges, whether they are facing some kind of achievements, but they'll own it all the time. When we are having some kind of career opportunities, we were always blaming other person, the father, the parents, the cousin, any family member who just switch us, go for this thing. We always say, I don't want to do this. This person always said to me, you have to go for it. So we always blaming to the others. And when we actually picked up by our own desires and the wish, then we'll accept our drawbacks, we'll accept our failures, and then we can go for next success life. So that's the big thing about it. And if they do, they will always feel
and they will do more and more about it, and they will do wonders in their specific fields. जब उनका वो पैशन होगा तो ऐसे ऐसे काम भी कर जाएंगे जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई हमारा स्टूडेंट, हमारा लर्नर ऐसी चीजें भी इनोवेट कर सकता है पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी। क्योंकि जब आप सेंस ऑफ लिबर्टी किसी को देते हैं तो उसको पता होता है कि मैं कहाँ तक पहुंच सकता हूँ, और ये आसमान या ये घर या ये एक स्कूल मेरी बाउंड्री नहीं है, बल्कि अभी वो सातों आसमां और भी हैं जो मैं पता नहीं क्या कुछ करूंगा उनके लिए। सो दैट्स इट। दैट्स अमेजिंग, दैट्स जबरदस्त है। आपको हिजाब बेटा, आपको कुछ बोलना है? यू वांट टू से समथिंग? आपने कुछ इससे कोई आपको फील आ रही है कि मिल्ली मैम के जो अभी एजुकेशन चल रही है उस वाले से आप कुछ बोलना चाहती हैं? जो एम्पथी मैप की बात हो रही है, एम्पथी की आपको समझ आती है कि एम्पथी होती क्या है? आप किसी के साथ एम्पथाइज करते हैं, जैसे कोई खुश होता है तो भी आप एम्पथाइज करते हैं उनके साथ, आप उनकी सारी फीलिंग्स को दोबारा लेक्चर करती हूँ, मुझे अभी क्लास जो शुरू करा रही है, आई विल बी बैक। ओके। हाँ, याब क्या लें बेटा? आप आर यू स्टूडेंट और आप ये क्या हैं, वॉलंटियर हैं क्या? आपको आवाज आ रही है मेरी हिजाब? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, can't see. So Recording in progress. What would we state? Yeah, once they have an education, what will they do differently? All right. Okay. yeah, I mean, all right. So once we know the big can I- why, who I'm going to close. can the I room join the now. We'll discussion? get back together, and let me just say, okay. can I join the discussion, please? Yeah, we are having some trouble with that. We were doing it, but people come and go. Okay. Okay, so I'm going to close all the rooms and we'll come back together. Okay. Can I ask? I 30 mean, seconds. 20 seconds. 20 seconds, everybody will be back. Yeah. okay. Yeah, just hang on. Just let's get everybody back and then we'll have your questions up our. Okay. Okay. Yeah, 4 seconds. This is growing so fantastic. I do not want to finish this. If you allow me, we can have a session if weekly, or if not weekly, then at least fortnightly. I've already committed to do 4 and then we'll have to discuss it. Okay, so let's go to the Okay. design thinking. So now what we have done, let me go back to this, is we have a big dream, all right? And now we have to stop, think, organize, plan. Let's go back to this, all right? Stop, think, organize, plan, and we say, why does it matter? Who cares? What exactly is success? We are not talking about how until the end, okay? So why, who, what, and then experiment, prototype, learn from mistakes. Now here's what I want to do. We'll just do this all together. I'm going to ask 2 of you to play rock, paper, scissors, okay? Rock, paper, scissors. Do you know how to play that? Rock beats scissors, rock beats scissors, paper beats rock, and scissors beats paper. Paper beats rock, and scissors beats paper. Please take a picture if you need to. Okay. So now, okay. Who wants to play? Who wants to play? Who would like to play? Who would like to play and show us? Okay, Hira. Okay, Hira. What's you? And someone else. Okay, someone else. Okay, Aisha. Aisha, go ahead, Hira and Aisha. Maybe Hira and Aisha will have you guys play. Okay, so let's spotlight you. And then where's Aisha? Okay. Oh.
Raise your hand again. Raise your hand again. Play. Sorry, I can't see. Who else wanted to? Okay, you were going to do it. Okay. Okay, so you two, are you two willing to play? No? Yes. Okay, go ahead. You're going to, but let me tell you, rock, paper, scissors, you have 15 seconds to play as many times as possible, and you get $1,000 cash every time you win in 15 seconds. Wow! Oh my gosh. Okay, so go. Ready, go. एक दूसरे के साथ खेलना है। I'm doing the हम दोनों ने एक दूसरे के साथ खेलना है। I'm doing a 1, 2, 3 go. Both us 1, 2, 3. Okay, Good 1 second. I won. Okay, so how much 1, did 2, you 3. win? Okay, one more. Okay, one more. One only. All right. One. Okay, so Kira, how much did you win? It's a tie. 1. One. And how much did you win a FIFA? How much did you win a FIFA? I think the most anyone has ever won in 15 seconds is $30 each person so far. Let's play together. I'll show you. Let's use 2 hands so far and let's share. I'm going to make rock with one hand and paper with the other. And you make the opposite. So make paper with your other hand. Make paper with one hand and rock with the other. And now we're going to go like this, as fast as possible. I will win on this hand, you will win on the other hand. Okay? If you can do both hands, and you do as fast as possible, and you can share, and everybody can win 30,000 each, instead of competition, fighting. Now, this is an example of big what. What exactly was the purpose of rock, paper, scissors, this exercise? What was the reason we were doing it? Collaboration? Coordination? No, it was to get money. To get money, okay? And so if you compete, you only get 1,000 or 0. But if you say, hey, stop, think, organize, plan. Hey, why don't we have one hand with rock, one hand with paper? Okay, now go. But how much planning did you do before you started to play? No planning, right? No planning. This is the problem. Whenever you have a job or a project or a goal, the first thing we do is we start. But don't start. Stop, think, organize, plan. Why are we doing the rock, paper, scissors? To get money. Who are the stakeholders? Oh, me and my partner. What exactly is success? More money. Measures of success, more money. Okay. All right. So, do you all have a pencil and a piece of paper? Anybody have a pencil, piece of paper? Please get pencil, piece of paper. I want you to please मेरा मुझे पेंसिल पेपर देना जल्दी से. draw a tree. Okay, everybody? Draw a tree. Tree when you're done. You have a tree. Everyone have a tree. Draw a tree. The same tree. Oh, no, we didn't all draw the same tree. Why? Okay, because there's one more step we need if we're going to be really clear about exactly what we are creating. We don't all draw the same tree, but imagine if I had said, imagine a tree.
It's a pine tree, trunk at the base, 3 meters tall, 75 branches, 5,289 needles, each 3 centimeters. Would you all have drawn the same tree? Similar, very similar, okay? So for your amazing dream, you need big why purpose, big who cares stakeholder analysis, big what exactly is success. And you need to have some measures of success, like scorecard, so you can achieve this. If you will not create anything useful, it's like telling the priority of the car parts when you don't know why we want the car. We don't know who wants the car. It's like playing rock, paper, scissors, competing when you could cooperate and make 30 instead of 1,000. All right. So this is, once more, this is the design thinking approach to stop, think, organize, plan, big why, big who, big what, and measures of success before how. This goes in a circle, it's iterate. And finally, you guys. Now let me we're not going to do today all of it, just it, but it takes about 3 minutes to get one success. So I just want you to imagine, you have a magic wand, and you can get 3 big wild ideas of how, okay? So I want you to go into your breakout rooms one more time, either by yourself or with a partner, to have 3 ideas. If you absolutely knew, if you absolutely be successful, what would you do next week, next month, next 3 months, okay? How? So this is the big how. If you knew you were guaranteed success, what? Okay, how? Things you could do next week, things you would do next month, things you would do next 3 months. Okay? If you knew you were going to be successful, what would you start? What would you begin? So let's go into breakout rooms and do some more thinking just for 3 minutes, okay? The big how, What I need to plan, I mean, since I'm all alone and probably somebody gonna join me soon. So what I gonna do for achievement of my whole the goal, which is an abundant life, which is sustainable and respectable, happy, and they live abundant life with abundant sustainability. So what I'll do, the I plan to get somebody. Noor Mustafa, how are you, Noor? Unmute and just show up. Hello, Noor. आप अपने इसको कैमरा को ऑन करें और अनम्यूट करें. Can you hear me? Hello. Noor, there's no point कि हम अगर हाँ yes.
हेलो, हाँ अनम्यूट करें। अनम्यूट प्लीज। नूर अनम्यूट की। यस, हाँ आपके क्या प्लान्स हैं नेक्स्ट वीक में और नेक्स्ट मंथ में और नेक्स्ट 3 months में टू अचीव योर गोल? एंड दिस इज मुअज्जम अदनान। हेलो मुअज्जम। यस सर, वैसे मेरे प्लान्स डेफिनेटली हैं, मैं काम भी करता हूँ। डेफिनेटली प्लान्स हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ राइट नाउ। वैसे ईयरली वेट एक मिनट तो कहीं पे डिस्टॉर्शन है कि जो बंदा नहीं बोल रहा हो ना अपना, हम अपना माइक म्यूट कर लेते हैं सो दैट आप सिर्फ बोलें, तो उसमें क्या होगा कि हमें क्लैरिटी रहेगी। दोबारा बोलें अपने, आपने 1 month का, 1 week का, 1 month का और नेक्स्ट 3 months का प्लान बताना है, ठीक है? ओके, बैक टू यू। नो, बैक टू यू। ओके सर, थैंक यू। यस सर, ये है कि प्लान्स में क्रिएट करता हूँ और मोस्टली मैं वीकेंड पे अपना लिखता हूँ नेक्स्ट क्या क्या करना है। और जो मेरा बिग प्लान है, सबसे बिग प्लान मेरा अपना खास प्रोडक्ट जिसपे मैं काम कर रहा हूँ, बेसिकली एज अ डेवलपर मैं खुद ही एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ। इसका मेरा प्लान है जिसको नेक्स्ट मंथ तक कंप्लीट करने का, जो मोस्ट बिग प्लान है जिसपे करंटली मैं काम कर रहा हूँ। तो ओके, मैं ये नहीं पूछना चाहता कि आपका प्लान क्या है, बट उससे फायदा क्या होगा और वो जो आपका एक्चुअल पर्पस है वो क्या सर्व होगा, मतलब कि वो क्यों कर रही हैं। क्वेश्चन इज क्यों। अभी हम हाउ के फेज में है इस वक्त, जो हमारी डिस्कशन चल रही है वो हाउ के फेज में है। आप वो कर कैसे रहे हैं और अगर इस वीक में क्या, नेक्स्ट वीक में क्या करेंगे, उससे नेक्स्ट मंथ में क्या करेंगे और आफ्टर 3 months क्या स्ट्रेटजीज होंगी आपकी, ये आइडियाज क्या हैं आपके, मतलब कि आपके क्या सिमिलर एक ही स्ट्रेटजी है आपकी कि जो भी कर रहे हैं वो इस वीक में भी वही करते रहेंगे, नेक्स्ट मंथ तक भी वही करेंगे और अगले 3 months के बाद भी आप यही कर रहे होंगे, या यू हैव सम मोर? हाउ, हाउ के अंदर आइट्रेशन की बात हो रही है, यानी कि आप चेंज करें अपने जो आइडियाज को लाएं और डिफरेंट ideas to do things different in different ways. Back to you, Noor. ओके सर, एज यू नो थिंक मेरा जो नेक्स्ट वीक तक का प्लान है प्रॉपर, इस पे जो प्रोडक्ट मैंने सोचा हुआ है उस पे रिसर्च करना है। मैं R&D करूंगा नेक्स्ट वीक तक प्रॉपर के वो जो मेरा आइडिया है वो कितना पावरफुल है, क्या एग्जिस्ट करता है पहले या नहीं करता। तो मेरा रिसर्च क्या है, नेक्स्ट मंथ तक उससे या 1.5 month तक मैं उस प्रोजेक्ट पे काम करूंगा। और अगर 3 month तक चला जाए तो फिर मैं 1.5 month का प्रोजेक्ट कंप्लीट करके फिर उसकी मार्केटिंग की साइड चला जाऊंगा। और मेरा फिर फ्रेंड सर्कल है जिनसे मैं मार्केटिंग की हेल्प लूंगा। तो मेरा 3 month का नेक्स्ट 6 month तक मेरा फुल प्लान है कि इसी पे मैं काम करूँ। तो डेफिनेटली उसे अभी स्टार्ट करूंगा, बनाऊंगा, उसके बाद बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये कुछ इस तरीके से मेरा प्लान। दैट्स वंडरफुल, जबरदस्त नूर, बहुत अच्छा है। ये आपका रोड मैप है जो आपने बताया है। वो बात कह रही हैं कि एक काम को एक्चुअलाइज करने के लिए आपके जो नंबर्स ना 3 से 3 हज़ार तक हो सकते हैं कि आप उसको कैसे 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 कर सकते हैं। मेरे ख्याल में हमारा टाइम खत्म होने हो गया है। लीव द रूम एंड गो बैक। Recording in progress. Okay, is everybody back? All right, one more second here. Yeah. All right, so anyway, I know they didn't have much time. This is just a very short, what we're doing here, but we're going to have final wrap up here is going to be to prototype this. Now, prototyping can be done many different ways, right? One of the nice, fun ways is to have a news report from the future. I'll show you some prototyping approaches, and then we're going to do news from the future, because sometimes we don't know how to do it, so we just prototype or do an experiment. On the left
If you don't know how to be a great artist, you might draw something simple, a bit more realistic. On the right-hand side, it's more details. Here are some prototypes we made of human beings who could not attend my workshop one time. Here's a prototype of a mobile swimming pool. And, oh, here's one of my favorites. Here's a prototype of how to cook a lot of hot dogs at the same time. You can also do pretend apps standing behind a piece of paper, or you can create a written prototype. Or this is a real example of the thing on the left was a prototype for a surgical device that was created. So prototyping can be done many different ways. The one I want to use today is called News from the Future. We are going to pretend that it's the future. And we are creating news headlines from the future. And everybody is listening. And you are saying the headline of what you have created, what the news report would say. So I want to do it verbally. So, okay, so I'd like to have somebody volunteer. Here's a microphone. Ladies and gentlemen, it's so exciting. Here we are. It's the year 2030. All these amazing people that we met 5 years ago have achieved their incredible goals and dreams. They started with a big why. They talked about the big who stakeholders, empathy map. What were they thinking, doing, feeling, saying when it's successful? They had a clear vision of big what exactly was success and the measures of success. They generated 3,000 ideas and then they took action one by one. Each day, each week, each month, each year. Hey, Zafar, nice to see you. What's one headline? Let's say one of the headlines, your news report, millions of people listening. Hey, ladies and gentlemen, I've got a great, fantastic thing to tell you that now the world has stopped fighting. Now the abundance is all around. Everybody has a home, the happy home, and everybody's living in collaboration, cooperation, and having fantastic life. Wow. Great. Pass to the next person, Zafar. Next headline. We have time for two more. Yeah, I'll pass it to Rakshana. Okay, yeah, come on. Thank you, Zafar. Thank you, Kimberly. I am so inspired by what Zafar said. I cannot top what Zafar said, but everyone in the world has a minimum universal income. Everyone has traveled at least 5 countries, and Wow. I'm successfully running my foundation and Yes. 501c for the School of Life. Wow. Thank you. Thank you. Back to you, Kimberly. Let's hear from Remat. Remat, what about you? News from the future headline. Okay, everyone, it's Ahmed from Karachi, Pakistan, live reporting. And I'm glad to tell you that every person with disability here in Pakistan is living a wonderful life, a happy life, and they are very happy at the moment. Thank you. And let's have last one, Ali Raza Panjwani Jobswala. Yeah, finally the million of people get hired remotely, and there's something I've got the abundance mindset, and still they are progressing for the better life. Yay! Okay, so just close your eyes for 10 seconds. How did that feel? It feels amazing, amazing. Amazing. Okay. Now, of course, we have to go out and take action. So I want you all to put in the chat what's one thing you will do this week to take action, to experiment, to prototype, to learn, to grow, to move in direction. Stop, think, organize, plan, and move in the direction of your big why, big what, and measures of success. Please put one commitment to action in the chat. And then take action, and I doubts for this. And he can share it with you. And then someday I want to hear yours, how you are going forward. The Japanese say, fall down 7 times, stand up 8 times. Never give up.
keep going, keep growing. All right, into action. Anybody? All right, interview. Yay! Thank you, Zafar. Commitment to action, please. Definitely, Mr. Chanda. We'll do it tonight, inshallah. Cool. All right. All right. People put action. If you just think, I should do this, there is only a 10% chance that you'll do it. You write it down, there's a 40% chance. If you tell a group like this, I'm going to do this, please check on me. 90% chance you will take action. So please think it, write it, say it. Who is willing to say? Commitment to action? Me. Go ahead, Noor. Okay, Zafar after Noor. Noor first. Unmute. Yes, I'll work on my SaaS project. Yes, work on. I am already on it, and I'll be interviewing the fantastic people. I have a bunch of good people. They are abundant, and they are teaching, mentoring me, and I'm already on it. I'm doing this, and you know, the REHAN is the foremost. Yay! All right. Okay. Anyone else want to say? All right. Thank you so much, everybody. Let's have all yay hearts and show our appreciation. Thank you so much. Design nice plan, big why, purpose, ask why 5 times, big who, stakeholders, important stakeholders, do empathy map, what exactly is success through the eyes of the stakeholders, and the measures of success, then generate ideas and prototype, and take action. Keep going, keep growing. I will send the presentation summary handouts to the bar. He can share with whoever he wants. All right, you. Thank you so much. Thanks for staying 3 minutes late. Take care. Bye-bye. Thank you, Sai, Thank for you the for wonderful session. thank you for sharing Thank your you. energy. I'll just take a minute. I'll just take a minute for all. Yay. Yay. I'll take a minute, Kimberly, please. Thank you, friends. Thank you, Kimberly, for sharing your energy, wisdom, authentic leadership with us. Your passion for transformation is contagious, and your ability to turn impossible into action is truly inspiring. Your session was more than just workshop. It was a WorkShock. It was wake-up call to lead boldly, think differently. And thank you so much, Kimberly, for being part of us. Bye-bye. Yay, bye-bye. Keep thinking out of the box, out of the box. Woo! Okay. Thank you. Borrow that. I want to borrow that brown thing you have. Yes, I want to give it to you. Come into my house, I give it to you. Okay, sounds good. It's a deal. All right. I also have one more really good one. This is thinking out of the box thinking. What? Out of the box. Amazing. This would look great on Salva, I guess. I think, yes, it would. Yes, everybody. Thank you so much. Woo. Okay. See you soon. I'm going to leave, but you can stay. All right. Bye-bye. 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 Take care. Thank you. Bye, Thank you so Allah much. Hafiz. Million thanks to Bye. you. Thank you. Great of you. बहुत अमेजिंग सेशन रहा आप लोगों के साथ, और आपने टाइम निकाला और मेरे ख्याल में इंस्पिरेशनल था. हम कोशिश करते रहते हैं कि ऐसे ही सेशंस करें, बल्कि आप सब लोगों के साथ, जिस तरह से रहमत हैं, हमारे पास बहुत अच्छे लोग बैठे हैं अभी इस वक्त, और उनके सबके पास बहुत सारे लोग हैं. मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अली भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, रुबाब हैं यहाँ पे, हमारे काफ़ी सीनियर लोग हैं अभी हमारे पास हैं, और मैं चाहूँगा कि सबका नाम पॉसिबल नहीं होगा, बट सब लोग इसी तरह जिनसे भी आप लोग जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे पास अभी रक्षिंदा साहिबा बैठी हुई है, ये सिविल इंजीनियर हैं यूएस में, वो लाइक 2.5 डिकेड से और इनका एक्सपीरियंस है.
हमें इनसे सीखना चाहिए। इसी तरह के सेशंस इनके भी लेने चाहिए। और अभी तो हमारे पास बहुत ज़्यादा HR अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारे पास जो ये एक अल्लाह ने एक नेमत दी है, ये अबंडेंस है कनेक्टिविटी की, जो जूम की सूरत में है या रीस्ट्रीम है, स्ट्रीम यार्ड, बेशुमार और चीज़ें हैं। और मैं चाहूँगा कि रहमत भाई या मैं हमें कोऑर्डिनेशन में इसको चेयर करें और हम इस तरह की सेशंस जो हैं हम जिस तरह, जब मैं इनके पास काफ़ी देर से इनसे रिक्वेस्ट कर रहा था, लगा हुआ था, तो ये शी वॉज वेरी काइंड और वो बिजी थी, पता नहीं कितने महीनों से मैं इनके साथ था। बट आप सिर्फ ना एक प्यारा सा कोऑर्डिनेशन रखें, उनके साथ इंटरव्यूज जिस तरह करते रहते हैं उनके साथ हल्का सा इन टच रहें। जैसे ही उनके पास टाइम होता है तो वो बहुत कहते हैं शी वाज फिनोमिनल। उन्होंने जो चीज़ें हमने ज़िंदगी भर नहीं सीखी थी ये। और मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर मेरे बचपन 40 साल पहले मुझे ये सारी चीज़ें पता चल गई होती जब मैं छोटा सा बच्चा था, तो मेरे ख्याल में मेरी ज़िंदगी काफ़ी डिफरेंट होती। तो और मैं चाहूँगा कि इसी तरह हमारे पास, जिस तरह अभी मैं दोबारा नाम लेना चाहता हूँ कि मैडम रक्षिंदा है हमारे पास, इनको हम पकड़ें और इनसे हम रिक्वेस्ट करें कि इसी तरह के सेशंस लें, क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत और सक्सेसफुल लाइफ क्रिएट की है खुद के इन्होंने। और मैं चाहूँ आप लोग भी प्लीज़ अपना इनपुट भी दें और अपनी एफर्ट्स का भी अदा करें। बिकॉज जिस तरह वो कह रही है ना, व्हेन यू राइट समथिंग, तो वो आ जाता है कि उसमें बंदे एक्शन में आने के उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं ना, हम बात कर सकते हैं कि हम 1 2 3 लोग जितने भी हमारे इसमें हैं लाइफ में, मैं बहुत सुन को कोशिश करता हूँ। मैं इवन किसी को भी मैं पॉडकास्ट करूंगा ना, चाहे वो, मैं कभी भी नहीं देखता कि ये बंदा प्रोफेशनली दुनिया के हिसाब से कितना कम बेनिफिशियल है टू द सोसाइटी, बट उसके पास हमेशा कुछ कुछ ऐसा होगा जो आपको नहीं पता होगा और वो हो सकता है आपकी लाइफ ही चेंज कर दे। तो इसके लिए मैम रक्षिंदा, आपका क्या, व्हाट्स योर टेक ऑन द इशू? अगर हम आपको रिक्वेस्ट करें कि आप हमें सिविल इंजीनियरिंग के गुर सिखाएं, तो आप क्या इसके हवाले से क्या कहती हैं? जफर भाई बहुत शुक्रिया। फिर मुझे हाथ रेज द हैंड के रिकॉर्डिंग अभी चल रही है या कौन बोली? नहीं, हम इसको मैं लाइव भी अगर आप चाहती हैं तो हम उसको खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आप ज्यादा अहम है हमारी लाइव सेशन से भी। दिस इज, ये आपका शो है, आप जैसे चलाएं उसको। मुझे सिर्फ ये था बिकॉज आई ओनली अटेंडेड टुडे, तो आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड इन रिक्वेस्टिंग रिकॉर्डिंग्स ऑफ द पास्ट सेशंस और स्लाइड्स जो जिसमें काफी श्योर, यस मैम, आई प्रोवाइड एवरी जी। और किम्बरली को मैं आई विल गिव अ शाउट आउट टू किम्बरली, उन्होंने 4 हफ्ते मुसलसल टाइम देना बहुत बड़ी है। वो रहमत भाई से पूछे, हम 15 मिनट नहीं कोऑर्डिनेट कर सके, 1 हफ्ते से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। और आज भी मेरे पास टाइम, मेरे 11 o'clock हो रहे, 3 to 4:30, 5:30 के हो रहे। तो ये देखे ना, किम्बरली को इतना टाइम देना हम आपकी बहुत बड़ी बात है। और पंजवानी साहब से भी कांटेक्ट रखेंगे। बट जफर साहब, आपसे ऑफलाइन बात हो, जो आप हैं, आपके पास टाइम है, मैं आई विल हैव टू गेट बैक टू यू, लेकिन इट्स एन ऑनर। लेकिन आप औरों से भी तो पूछे ना, गुलसान थी, रुबाब है, रहमत साहब है, इतने सारे लोग बैठे, आप उनसे भी पूछ लें। मेरा सब के लिए यही है। और रुबाब तो चूंकि वो हमारी रेहान सिस्टम का माशाल्लाह उनका जो जज्बा है, और वो है, और रहमत भाई हैं, अभी हमारे पास नए लोग भी हैं और पुराने भी हैं। तो मेरे ख्याल में तो एक वॉलंटियर एक्टिविटी है, अनटिल अनलेस कोई भी बंदा अपने दिल नहीं करता, तो बेसिकली ग्रोथ तो हमेशा अंदर की बात है ना। तो मैं चाहूंगा कि सब लोग खुद से वो करें, अपना हिस्सा डालें। मैं तो ये चाहूंगा, क्योंकि नेशन बिल्डिंग है। जब हम पहले सोचते हैं, फिर हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं वो हमारी दुनिया क्रिएट हो जाती है। द वर्ड्स क्रिएट रियलिटी। तो मैं चाहूंगा, ओवर टू पंजवानी भाई, आप क्या कहेंगे? हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, जबरदस्त सेशन वगैरह, बहुत सारी चीजें पता थी, बहुत सारी चीजें रीलर्न हुई है, और कुछ एक्टिविटीज बेस्ड, बहुत एक्टिविटी बेस्ड एनर्जी रेस और नंबर ऑफ ब्रेकआउट रूम्स हुए। तो दैट इज समथिंग के 1-1.5 घंटे में बहुत सारे ब्रेकआउट रूम और बहुत सारे क्वेश्चंस
और जो ब्रेन के अंदर ओवरलोड पड़ा समवेयर, उससे बहुत ज्यादा एक मजा आता है सर, क्योंकि हम अक्सर ये चीजें कर रहे होते, क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे होते। तो आई वाज यूज्ड टू डू के बहुत सारी एक्टिविटीज करवाई जाए, बहुत सारी एक्टिविटीज में ही बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे होते और उस क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलते रहे, तो वो जो हमारे जो स्टक ऑफ माइंड है, ब्लॉकेज है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत प्रॉफिटेबल होता है। तो ऑफ कोर्स मुझे भी ऑफ कोर्स चांस मिले तो ऑफ कोर्स एक्टिविटीज इस सेशन को उर्दू में या फिर मजीद और एक्टिविटी बेस्ड जो अबंडेंट माइंडसेट हमारा समवेयर रुक गया है बहुत सारे चीजों के लिए, हम कहीं ना कहीं पजल होते हैं। इवन बहुत सारे बच्चों को जो इंग्लिश के ही जो चीजें हैं उसको प्रैक्टिस में ही वो डर होते हैं, तो उसमें भी समवेयर किस तरह उनको वो चीजें अपने एक्शन में टास्क को वो चीजें करते हुए किस तरह एंजॉय करना चाहिए, तो वो चीजें लाइफ की छोटी छोटी नियमतों को और चीजों को करते हुए आगे किस तरह बढ़ सके, तो एवरीडे हमारा फ्रूटफुल होते रहे। तो इस पे हम एक सीरीज भी मैं भी प्लान कर सकता हूँ चीजें कि किस तरह हम मजीद अपनी स्टडी को अबंडेंट और उसके वाकई में रियल टाइम पे किस तरह काम ले आए उसको। थैंक यू सो मच अली भाई। अच्छा आप रहमत भाई, आप क्या कि आप उस पुल पे बैठे हैं जिसके नीचे सारा पानी जाता है, जो आपके पास अल्लाह ने आपको जो ड्यूटी लगाई है ना, और रेहान भाई ने जो आपको एक ऐसी जो आप इंटरव्यूज का है, मैं जिंदगी में जितना इंटरव्यूज करके सीखा हूँ मैं किसी और चीज से नहीं इतना ज्यादा सीखा, और आप तो इसके बादशाह हैं। तो इसके ऊपर आप इसका आप स्टीयर करें इस कमेटी को, और आप हमें अब ड्यूटीज दे दें, जो जिसको देंगे मेरे हाल में आपकी माशाल्लाह इतनी ऑनर है कि कोई डिक्लाइन नहीं करेगा। आप इसको इंजन बने इसका और इसको हेड करें आप। व्हाट यू से। बहुत शुक्रिया जफर साहब, आपकी मेहनत को सबसे पहले सराहूंगा कि पिछले इतने हफ्तों से आप इतनी मेहनत कर रहे हैं सेशन के लिए, फुल ग्रेट। और बहुत अफसोस हो कि मुझे पिछले 3 सेशंस में मैं नहीं आ सका, लेकिन आज जब मैंने ज्वाइन किया तो इट वाज मीनिंगफुल, इट वाज नॉलेजफुल। तो बहुत आई नो मिस किम्बरली, I think few months ago, रही था कुछ अर्सा पहले, and through the same interview thing जो आपने कहा, तो ये इंटरव्यूज इतनी कमाल की चीज़ हैं कि तो अल्हम्दुलिल्लाह रेहान भाई के जो नेटवर्क है वो काफ़ी सारा मुझसे भी कनेक्टेड है, अली रज़ा भाई से भी कनेक्टेड है। तो हम जो पुराने रेहान भाई के कनेक्टेड लोग हैं, तो हमसे काफ़ी जो नेटवर्क है वो कनेक्टेड। तो बहुत अच्छा सेशन रहा। बट मैं जो रेहान ने ग्रुप बनाया और उन्होंने कहा कि हम इसको दोबारा से करें, तो मैंने आपका ही नाम सजेस्ट किया क्योंकि आप इसको काफ़ी अरसे से देख रहे थे। तो आप अगर इसको दोबारा रिक्रिएट करें और हम सब दोबारा आपके साथ जुड़ें और दोबारा हम इन सब चीज़ों को लर्न करें, क्योंकि मटेरियल भी आपके साथ तो शेयर करेंगे, तो आप दोबारा से जो है हम इसको करें और दोबारा लर्न, रीलर्न, अनलर्न एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम दोबारा से करें, ताकि वो साइकिल चलती रहे और बार बार एक पॉइंट हम रीट्रेट करेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी उसमें हम किसी तरफ जाने निकले जाएंगे। तो मैं आपके साथ हूँ, ऑल द बेस्ट एवरीवन, और आप करें। That's amazing, मैं आई एम ऑनर्ड। और अली भाई आपकी एंडोर्समेंट आ गई है रहमत भाई की तरफ से, दैट्स अमेजिंग। यस वी नीड टू दिस ऑनेस्टली। इसमें जो जितनी चीज़ें क्रिएटिविटी के हवाले से थी, और हम एक चीज़ बात करते हैं ना कि हम आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं, तो किम्बरली ने शी सेड कि वेयर इज द बॉक्स, मतलब हमने खुद से क्रिएट किया होता है वो भी। तो अमेजिंग कई चीज़ें ऐसी हैं कि हमने, इसीलिए मैं भी जो हमारे से यूरोप अमेरिका आ गया है वो इसी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ द माइंडसेट, जिस तरह अली भाई भी कह रहे थे अबंडेंट माइंडसेट की। तो जो टोटल जो मेरी तो जो मैदान है मेहनत का, जो मुझे रेहान भाई ने जो ड्यूटी लगाई है वो है माइंडसेट चेंज करना, और ये इस तरह की ट्रेनिंग से माइंडसेट चेंज होता है, इस तरह की एक्सरसाइज। और श्योर यस, आपने जिस तरह ये मेरे लिए ऑर्डर कि आप रेहान भाई ने आपको लोगों को एक इस सोच में डाल दिया कि हम इसको रिक्रिएट करें, वी श्योरली विल डू। मैं इनसे अभी सेशन लूंगा दोबारा से भी, और इन जो वो लूंगा ना, फिर मैं खुद से हम बैठ के अली भी बैठ जाएंगे, 2-4 बंदे और हम ले लेंगे, हम इस कोर्स को डिजाइन करेंगे, और वो जब डिजाइन कर लेंगे तो फिर हम किसी को भेजेंगे कि मैम ये देखें हम क्या इसको परमिशन भी लेंगे उनसे, और अगर तो परमिशन दे दी तो जबरदस्त, नहीं तो एक बुक करके पेश उनको बना के पेश कर देंगे ताकि वो कर सकें। अदरवाइज मेरे ख्याल में शी इज काइंड ना कि वो हमें परमिशन देंगी,
और लर्निंग के लिए तो माशाल्लाह अमेजिंग है उनका। तो मैं कहूँगा मोइन भाई, आपका क्या कहना है कि हम इसको कैसे एक्चुअलाइज करें इस ड्रीम को? अच्छा मैम, बख्शिंदा चली गई, वो उनको रिस्पांस करते हैं, वो मैसेजेस कर देते हैं। यस मोइन, आप आर यू विद मी? यस, मैं कह रहा हूँ अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इसको हम एक्चुअलाइज कैसे करें, ये हम करेंगे कैसे? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस यस यस। जी सर, वो इस चीज को मेरे ख्याल से जब आपको ये मैम जो है ना, आपको जिस वक्त ये भेजे पूरी स्लाइड्स वगैरह, हम इसी कोर्स को जाकर रीडिजाइन करना पड़ेगा हमें। और जो उसने एक्टिविटीज सारी करवाई थी वो हमें वही भी करनी है, और उससे रिलेटेड वो चीज भी कुछ करनी है जो जो उन्होंने करवाया है ना। शायद मैंने अपनी लाइफ में तो ऐसा कुछ एक्टिविटीज ना ऐसी कोई स्टडी देखी, वो जब उन्होंने करवाया तो लगा कि अमेरिका हमसे अलग क्यों है, इतना एडवांस क्यों है, क्योंकि उनके पास पूरा सिस्टम। अगर ये क्या है, ये बड़े लगा था कि नर्सरी के बच्चों को पढ़ा रही थी, जितना इसका विजुअलाइज सिस्टम था ऐसा कि वो उसके पास इतने इमोजीज, वो प्रैक्टिकल पड़े हुए थे। वो जो कुछ कह रही थी कि जफर ये करना है, ये चीज पकड़ो, ये चीज करो, उसकी तरफ फेंको। अब वो नहीं, वो आपके ना मेरे पास पहुंच रहा था ना कुछ था, लेकिन फिर भी ये था कि वो 100% श्योरिटी थी उसमें फीलिंग्स थी, वो सारा कुछ विजन था। लेकिन और उसमें बहुत ज्यादा सीखे हैं, और मैं तो चाहता हूँ कि इस चीज को जब मैम आपको सेंड करेगी तो इसमें मुझे लगता है कि इसको रीडिजाइन करके उसकी इजाजत से हमें इसी पर ही कुछ करना होगा, क्योंकि उसके पास मटेरियल है ना। शायद हम अपने हिसाब से बनाना चाहें तो वैसा डिजाइन नहीं कर पाएंगे, उसको रीडिजाइन करें तो बहुत ज्यादा अच्छा कर पाएंगे उसको। That's wonderful. अफीफा, आपने, do you want to have few words on it? जी, मुझे उनके तरीके से जो उनका मेथड है उससे एक चीज बहुत स्ट्रांगली मैंने सीखी है कि अगर आपकी लैंग्वेज नहीं भी वो होती ना, तो वो इतनी आपको एंगेज करके रखती हैं, आप बोरिंग फील नहीं करते, आप हर चीज सीखते हैं। तो मैं कहती हूँ कि हम भी जो आगे अपने सेशन कर रहे हैं, हम उसमें ऐसे ही स्टूडेंट्स को एंगेज करके रखें, ताकि वो तो हमारी अपनी लैंग्वेज है, हम उसमें ऐसी चीजें शामिल करें, ऐसी चीजें उसमें ऐड करें कि जिससे बच्चे जो है ना वो जरा भी अपनी बोरियत फील ना करें, उससे छोटी छोटी चीजों से सीखें। हम अगर ऑनलाइन है, हमें लगता है कि हम सिर्फ जो टास्क दे रहे हैं, जो हमें स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, वो हम दे सकते हैं। लेकिन मुझे इस सेशन से ये आइडिया हुआ है कि हम इसमें एक्टिविटी जो होती है, जो फिजिकल एक्टिविटी, वो भी हम अपने सामने खड़ा करके हम दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने आपको खड़ा कर दिया उन्होंने सबको खड़ा कर दिया, उन्होंने अंदर बहुत अच्छे तरीके से चीज सिखाई। और मुझे ये एक नई चीज है कि हम हालांकि उनकी लैंग्वेज को उस तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे जैसे हम अपनी नेटिव लैंग्वेज को करते हैं। इसके बावजूद सब लोग ऐसे एंगेज थे जैसे कि वो बहुत ना, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनको समझ आ रही थी, सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रही थी। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर हम नेटिव लैंग्वेज में यही चीजें बच्चों को लेके चलेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट करेगी, बहुत हम छोटे टाइम में बहुत कुछ सिखा सकेंगे। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं अपने सेशन में जरूर इस चीज को शामिल करूंगी, चाहे किसी भी तरीके से लूं कि इसको क्रिएटिविटी और फन वे में कैसे किया जा सकता है, और इंशाल्लाह इसमें इम्प्रूवमेंट जरूर लाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू अफीफा। हिरा, आप कुछ कहना चाहेंगी इस वाले अपने तासुरात? जी, सामने को पहले तो सबको, और उनका माशाल्लाह से बहुत अच्छा स्टाइल था उनका पढ़ाने का, उनका सिखाने का। तो आई थिंक बहुत कम लोग होते हैं इस तरह से सिखाते हैं या पढ़ाते हैं, इस तरह लोग जल्दी कैच कर लेते हैं, और बच्चे खास तौर से। हम तो बड़े हैं, हमें मजा आ रहा था, तो बच्चे इसको ज्यादा एंजॉय करेंगे इस चीज को।
उनके साथ खेल के, उनके साथ इन्वॉल्वमेंट दिखा के हम उनको एक अच्छी उनको सीख दे सकते हैं बेसिकली। थैंक यू। वद्दोहा पुत्र आप इसको कुछ अगर हम अपनी क्लासेस वगैरह में आगे जाके आप करें तो काफी अच्छा हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। अमेजिंग, थैंक यू सो मच हीरा। वद्दोहा बेटा आप कुछ कहना चाहेंगी? सर थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, रहमत भाई, अली रजा भाई, अफीफा, मुइन, हिरा एंड एवरीबॉडी, वद्दोहा टू। बहुत अच्छा लगा, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, आप लोगों ने अपना टाइम निकाला और इसमें पार्टिसिपेट किया, और आपको इंशाल्लाह इसी तरह मेरी ख्वाहिश है कि हम एक ऐसी अबंडेंट वर्ल्ड बनाएं कि जिसमें हर बंदा अबंडेंट हो, इल्म में, अमल में, और हर चीज़ में देने वाला हो। खैरुन्नास मायनफाउन्नास की मिसदाक हो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।